And thanks to BellWether LLP, Brijesh and Ashish for getting me here second time. I'm not sure how many of you were there last time, but we'll try to do an annual recap of what we did last time. So we did fixed income, the first session by Lakshmi, and the equity, the second session. What do you think I will be doing? Equity is done, debt is done, so buy says, okay, good. So अगर equity आ गया और debt आ गया तो पैसा बनेगा? क्या लगता है? मुझे लगता है काफी मुश्किल है पैसा बनाना. It's not that easy. So probably I'll help you get there even better. So investing is a function of two things. एक तो knowledge होना चाहिए कि debt market क्या है, equity market क्या है. Second ये समझ आना चाहिए कि हम thinking कैसे करते हैं, decision making कैसे करते हैं. That's very critical. Because many investors I meet, they have not made money. They know it makes 15%, but it's not there in their statements. So we'll go little that side कि statement में क्यों नहीं आ रहा पैसा. Okay, so I have to make you understand a bit of psychology and history. तो थोड़ा boring है, but I'll try to make it simple for you. नहीं आ रहा है, उसका reason पता करते हैं अभी कि कहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, पैसा आने लगता है फिर चला जाता है. So where does it evaporate? Because it looks like सभी बोल रहे हैं 15% बनेगा, लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है. So okay, let me tell you a little bit of history of human beings, because I was not a good student of history, so I read about it. जब history की book थी तो मन नहीं करता था, अभी पढ़ना पड़ा. Any idea how old are we as human beings on Mother Earth? कितने साल से हैं हम लोग धरती पे? 10,000 years. Okay, any other answer? So we'll do it interactive ताकि आपको याद रहे मेरा सारा session. अगर मैं ही बोलता रहूँगा तो you'll be lost in your thoughts. So we are 2 lakh year old. हम 2 लाख साल से धरती पे हैं. In the present form of villages, cities, agriculture, industrialization, financial markets, we are there for last 10,000 years. Your answer was right, but कि 2 लाख साल में से पहले 1,90,000 साल कुछ भी नहीं हुआ. We were in the same form, living like a hunter gatherer. और हम 50 लोगों के ग्रुप में रहते थे. अगर 100 आ जाते थे तो लड़ाई हो जाती थी. We used to fight between both the groups. So that was the ideal size of 50 where we used to live in. So most of us, when we used to live for 50-60 years, we used to see only 50 people in our life. पूरी जिंदगी में 50 ही लोग देखे होते थे. Before 10,000 years. So this is where we were as human beings. So I am just taking you to the history कि हम कहाँ पर हैं अभी. तो आपको क्या लगता है महाभारत कितनी पुरानी है? आई एम बैड इन नंबर्स, बट मैं भी भूल जाता हूँ, बट तुक्का 5,000 साल, राइट आंसर. सो महाभारत इज 5,000 years ओल्ड. और पहला बैंक कब आया दुनिया में, वर्ल्ड में? 600 साल पहले, 1460. यू राइट. सो फर्स्ट बैंक केम अप इन इटली इन 1460s. पहला स्टॉक मार्केट कब आया? 1600. एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज 1600 समथिंग. So that is about 500 years. इंडिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब आया? 1860. एक बनियन ट्री के नीचे 6 ब्रोकर्स ने ट्रेड करना शुरू किया. सो 2 लाख साल से हम प्रेजेंट है धरती पे. एंड फाइनेंशियल हिस्ट्री कितना है हमारा? 500 years. 500 साल से पहले हमको करेंसी नहीं मालूम था, बैंक नहीं मालूम था, फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं मालूम था. सो लेट मी डू लिटिल कैलकुलेशन करवाता हूँ आपसे. 500 साल डिवाइडेड बाय 2 लाख, 2 लाख साल से हम हैं, बट फाइनेंशियल मार्केट्स हमने 500 साल ही देखा है. तो 500 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 0.2%. सो 99.8% ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स, वी डोंट नो दिस वर्ल्ड व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ. जो हम ये बात कर रहे हैं डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये तो और रिसेंट है, ये तो बिल्कुल ही नहीं पता है. ये तो 15-20 साल पुरानी गेम है. सॉरी, जरूरत भी नहीं पड़ी. ओके, सो जो हमारा थिंकिंग है, जो द वे वी टेक डिसीजंस, थिंकिंग जो है वो बायोलॉजिकल फिनोमेना है, इन द सेंस दैट इट्स कमिंग फ्रॉम एवोल्यूशन. व्हेन वी वर हंटर गैदरर्स, जब जंगल में हम होते थे 10 के ग्रुप में और सूखे पत्तों की आवाज आती थी, तो उसका क्या मतलब होता था? अगर स्प्लिट सेकेंड का डिसीजन लेट हुआ, दैट मीन्स डेथ. सो लाइटनिंग स्पीड डिसीजंस वर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल. और एक बार की बात है, 10 लोग थे जंगल में, जब हम 10 ही थे, फर्स्ट होमोसेपियंस. सो 5-5 के ग्रुप में डिवाइड हो गया जब सूखे पत्तों की आवाज आई. तो एक ग्रुप ने बोला कि हम भाग जाएंगे,
देयर इज एन एनिमल देयर, टाइगर है। दूसरे ने बोला कि यार हम तो अब स्ट्रांग होते जा रहे हैं एज ह्यूमन रेस, हम अगर होगा तो उसको मारेंगे, राइट, वी हैव टू फाइनली विन द बैटल ऑफ स्पीशीज। तो 2-3 दिन बाद पता चला तो जो 5 लोग मारने गए थे वो खुद ही मर गए, तो हम उनके बच्चे हैं जो भाग गए थे। वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल हु रैन अवे, राइट, सो दैट्स आवर डीएनए। सो जब खतरा आता है, व्हेन मार्केट्स फॉल, आवर implied response is to run away. So जो conditioned thinking हुआ है, that has happened in a very different environment. That was for survival. Today we are living in a very different world. Human brain does not understand the world which we have created in last 10,000 years. The brain is not optimized for that. हमें पता नहीं है डिसीजन कैसे लेना है, बिकॉज हम वैसे ही ले रहे हैं जैसा 99.8% टाइम में डेवलप हुआ ब्रेन. सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज ऑर्गन इनसाइड. Your lungs are more predictable, your immune system is more predictable, but this is liable for faults and lapses. Everyone. And there is also thinking, I was reading a blog last night because I had to speak this, that more intelligent people take poor decisions. The more intelligent you are, the decision making becomes even poor, because your ability to wind stories around what you have done wrong is much stronger, because you understand world more. तो आप उसकी कहानी बड़ी अच्छे से फिट कर लेते हो. Okay, so we'll get a little deep into that. So let me tell you अंदर होता क्या है, decision making कैसे चलता है. We have two kind of things going inside. एक तो emotions हैं और एक logic है. So logic is like the rider, जो emotions is like horse. तो rider emotions को control करके चलता है. But sometimes you know horse goes out of control, right? Emotions take the lead and you decide like that. So I know of people in Gurgaon. Even I have done that, so I'll share my journey. मैंने कैसे decisions लिए हैं life में in investing. So I know of people who say यार at the peak of bull run, office में 4 लोग बात कर रहे हैं, यार मैंने apartment book किया है. So your reaction is 4 लोगों ने किया है, so I will also go into that apartment. I'll book it. That's how we think. There's an emotional behavior. My colleagues are there, I'll be more comfortable. You don't know the different variables for taking this decision, but you've just felt comfortable doing it. Emotional decision. एक और इमोशनल डिसीजन, कॉलेज में पढ़ रहे हो, गर्लफ्रेंड बनी, पेरेंट्स को बताया कि ये है अफेयर, पेरेंट्स से बोला ये तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, बट यू रन इट इमोशनली, नॉट लेस लॉजिकली. सो ऑल ऑफ अस आर इन द सेम बोट, इंक्लूडिंग मी. आई हैव स्पेंट 13-14 years इन द इंडस्ट्री. आई एम स्टिल इन द सेम बोट एंड स्टिल लर्निंग. तो एक इंट्यूटिव ब्रेन है अंदर, एक रैशनल ब्रेन है. इंट्यूटिव ब्रेन टॉक्स टू फीलिंग्स, रैशनल ब्रेन टॉक्स टू थिंकिंग. And thinking is tiring. Thinking is very tiring, so we can't do it. It consumes a lot of energy, so most of the time we give up. Second level thinking करने में, anyways the data download इतना ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे ऊपर, that ability to think is getting lower and lower. And data downloads will increase. Geo is also come in now. So 6 o'clock in the morning you put your WhatsApp on, and by the time it's 10 o'clock you are exhausted with data. So much mails and WhatsApp. So my feeling is that your ability to take decisions will even worsen from here, because we are not optimized for this situation of handling so much data. मैं पढ़ रहा था, मुझे बोला you have to speak only for 30 minutes before this started. So human attention span was 18 seconds 10 years back, and अभी 12 सेकेंड हो गया है because of the smartphones. So we are creating a world which is more and more complicated, more and more interdependent, and we are finding it difficult to handle it. So you have the next app and you're struggling, अरे demonetization हो गया, Paytm कैसे download करूँ? So you're taking help. So you're forced to go in uncharted territories, and you're not comfortable doing that because it's not easy. So what is the result of last 10,000 years? There's huge material prosperity. We have what we didn't have 20 years back. But our lifestyles are bad, we have diseases coming in, we are exhausted, and poor decision making. So that's the outcome of what's happening. So 30 साल पहले क्या था, let's come to investing. 30 साल पहले क्या था, information was scarce. तो अगर आपके पास information है, you are that person in the city. If you have access to the stockbroker in Mumbai, he can give you a report, annual report, you were the man to reach out to. All that is gone. So you don't have any information edge today. Today you have computers scouting for mispriced bets, कि कहाँ पे कौन सा trade है, कैसे करना है. Human being is not required for that. So जो हमारा natural reaction है of handling
environment, because environment बदल गया है, so but we are not able to change because DNA वैसा है. तो उसकी वजह से क्या हुआ है, the edge has gone to people who are able to think independent. So though I have, after spending 9 years, I have never looked for any opportunity to work outside, but I hear job profiles where they say we'll be looking for a candidate with independent thinking. So that has become scarce now. Everyone wants a person who has independent thinking. So as investors, I think if you have independent thinking, you are the most cut out for the rewards. But if you're following what others are doing, I don't know. So we will get into now biases. Biases are like virus in the brain. तो हमारे दिमाग में कुछ 100 वायरस हैं जो बन के आए हैं अपने आप पीछे से, हमने नहीं बनाए हैं, but they are present. So I can't talk about 100 viruses or biases in next 20-30 minutes. I will probably tell you 2-3 and with examples, and then I'll tell you few learnings which I have had over 9 years at IDFC, some concepts which will help you become better investors. तो अब करें क्या, प्रॉब्लम क्या है, एक तो इंट्यूटिव ब्रेन है और एक रैशनल ब्रेन है. रैशनल ब्रेन यूज करने में तो बहुत टायरिंग है, थकावट होता है. तो क्या करना चाहिए, लाइफ को कैसे अप्रोच करें. सो दिस इज नॉट अ सेशन फॉर विच विल टेल यू टू लिव लाइफ फ्री ऑफ बायसेस. ओके, सो हाउ आई अप्रोच दिस इज, जब डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है मेरे पे. फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू अ रेस्टोरेंट and getting confused between कि नींबू पानी पीना है या पेप्सी पीना है या पानी पीना है. That happens, right? We go up and down. If somebody else orders a नींबू पानी, you say नींबू पानी, Pepsi तो Pepsi. So this decision has no outcome in life. So let the intuitive brain take lead. उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. But if you are buying an apartment in Gurgaon tomorrow, that's a big decision. So उसमें rational brain लगाने की जरूरत है. That's how I approach life. अगर बड़ा decision है तो देखना पड़ेगा कहीं पे मैं इमोशनल एंगल से तो नहीं स्वे हो रहा, और अगर छोटा डिसीजन तो लेट इट गो ऑन, इट इज देयर इन योर माइंड, इट्स देयर इन माय माइंड. सो वी वर एज अ फंड हाउस वेरी हैवी ऑन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सेकंड लेवल थिंकिंग, वंडरिंग कि पैसा बनता क्यों नहीं है इन्वेस्टर्स का, बोलते 15% आता क्यों नहीं है. ओके, सो वी अप्रोच द टॉप 3 thinkers in the world in investing and behavioral sciences. So we wrote to them that we want to talk to you and know more about it, कि पैसा क्यों नहीं बन रहा है. So we wrote to a man called Rolf Dobelli, who is the author of Art of Thinking Clearly. He's written a book which has 100 biases, 2 pages, 1 bias. So I'm not a great book reader, but I could read that book because 2 pages, 1 bias. So we reached out to him in Switzerland. When we look at the investment landscape, we try to look at global best practices and try to get that here. So उसने तो नाम भी नहीं सुना था IDFC का, Rolf Dobelli ने. But we wrote to him कि हम ये करते हैं, जब मार्केट बढ़ जाता है हम फंड बंद कर देते हैं ताकि लोग आए ना, बिकॉज दे लूज मनी, दे बाय, बिकॉज देयर इज अ हर्ड मेंटालिटी गोइंग ऑन व्हेन मार्केट्स आर अप. सो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड. सो विल टेल यू व्हाट रॉल्फ डोबेली हैड टू से अबाउट इन्वेस्टिंग, व्हाई पीपल टेक पुअर डिसीजंस. एंड फर्स्ट रिएक्शन वाज कि हम ये बायसेस इन्वेस्टर्स को बताएं या ना बताएं, बिकॉज लॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फंड हाउसेस कम फ्रॉम द पुअर डिसीजन मेकिंग व्हिच यू डू. सो फिर हमने सोचा क्यों ना बताएं, बिकॉज फाइनली इफ दे गेन दे विल बी विद अस मोर. Just hear him out. Investing is serious business, be it investing in mutual funds, stocks, or any other type of security. Done right, it can bring financial freedom to your life. Done wrong, it can be a painful experience that will cost you years, if not decades, to recover from. Making wise investment decisions is not easy. Why? Because emotions and thinking errors are an investor's fiercest enemies. If investing were easy, everybody could beat the market, which by definition is impossible. In this series of videos, I will present to you the most frequent and most consequential thinking traps when it comes to investing, and I will show you how to avoid them. These thinking errors are based on my book, The Art of Thinking Clearly. You might ask, what exactly are thinking errors or cognitive errors? The failure to think clearly is a systematic deviation from logic. And by systematic, I mean that these errors are not just occasional errors in judgment, but rather routine mistakes, barriers to logic
that we stumble over time and again. For example, it's much more common that we overestimate our knowledge than we underestimate it. Similarly, the danger of losing something stimulates us much more than the prospect of making a similar gain. In the presence of other people, we tend to adjust our behavior to theirs and not the opposite. And this is what I call systematic. These errors we make follow the same predictable pattern over and over again. People often ask me what motivated me to write the book. Well, to avoid frivolous gambles with the wealth I had accumulated over the course of my career, I began putting together a list of these systematic thinking traps, complete with notes and anecdotes, with no intention of ever publishing them. The list was originally designed to be used by me alone. I soon realized that such a compilation of pitfalls was not just useful in making investment decisions, but also for making decisions in personal and in business matters. And once I had prepared the list, I felt calmer and much more level-headed. I began to recognize my own errors sooner and was able to change course before any lasting damage was done. And for the first time in my life, I was able to recognize when others might be in the thrall of these very systematic thinking traps. Friends soon learned of my compendium and showed interest, and this led to weekly newspaper columns in Europe and in several presentations, and eventually to the book and this IDFC's video series. Now, when IDFC approached me originally to record this video series, I was quite skeptical. Why would a mutual fund be interested in teaching their clients about these thinking traps when much of a fund's profit is based on these errors? Well, IDFC turned out to be quite an exceptional fund house, one that shares a similar philosophy when it comes to good long-term investment decisions. So I passionately commend IDFC to bringing the knowledge of these thinking traps to its customers. So go ahead, watch the videos, and enjoy. So we have created a link for 22 videos from Indian context where Indian investors make mistakes. So those will be available with BellWether, Rajesh and Ashish, for if you would be interested, because everyone does not interest everything. So though we have displayed a copy of it outside on the stall also, but if you would like to know more about these biases, the decision making going here and there, so you can explore more. Because today is the world of self-learning. I can just take you in one direction and then you can follow it up. Okay, we'll slowly get into the biases. We'll cover 3-4 biases depending on the time. So we'll get into action bias first. Okay, so action bias was researched by Israeli researcher Michael Barley. He said because the survival in hunter-gatherer days was because of reacting fast. We are wired to do that, to react fast in everything. So let me give you an example. I was thinking Gurgaon ki example do. So Sahara Mall ke bar, raat ke time, Saturday night, 11 baje, you see a group of 10 men drunk and shouting at each other, and looks like ki kuch major scuffle hone wala hai, and you have Haryana police watching from a distance. Okay. तो द रिसर्च ये बताता है कि अगर तो ऑफिसर्स यंग हैं उस टाइम पे, सो दे विल गो देयर टू दैट ग्रुप और कुछ मेजर तमाशा होने वाला है. बट इफ दैट ग्रुप हैज यंग ऑफिसर्स एंड ओल्ड ऑफिसर्स, दे वॉच इट फ्रॉम अ डिस्टेंस टिल इट रीचेज दैट बॉइलिंग पॉइंट. सो द ओल्ड ऑफिसर्स हैव एक्सपीरियंस. दे नो दैट टेकिंग एन एक्शन इज नेचुरल प्रॉम्प्ट, कि जब एज ए पुलिस यंग पुलिस ऑफिसर इंडक्टेड इन द फोर्स 2 साल हुए हैं, मैं देखता हूँ कैसे कर रहे हैं ये लोग. बट the old guys know it'll settle down in 5 minutes. ऐसे तो रोज ही लड़ाई करनी पड़ेगी. So 90% of the time it takes care. So investors का हाल वही है. You are like young police officers of Haryana police in the market. So your prompt is to go in, but you have to hold yourself because society भी ऐसा है. Society rewards action than inaction. आज तक मैंने सुना नहीं किसी को कोई मेडल या ट्रॉफी मिला कुछ ना करने के लिए. Even in managerial experience, if I am facing a tough situation, अगर मैं अपने बॉस को बोलूँ ना सर ये करते हैं वैसा करते हैं, और होगा क्या कि
कुछ टाइम बाद वो सिचुएशन लक से ठीक हो जाती है एंड इट इज एसोसिएटेड विद माई एक्शन. So it was better to what it happens to intelligent people also. Doctors, patient गया, doctor knows कि 3 दिन देखना चाहिए, अभी कुछ नहीं करना चाहिए, but he tends to give you the medicine. नहीं आप ये एक दवा तो ले ही लो, you know. So that's action bias coming in. He knows, and also there is a reverse reaction. अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, आप पेशेंट हो, आप मेरे पास आए, मैंने बोला अभी कुछ नहीं 3 दिन, तो बोलोगे ये कैसा डॉक्टर है. Similarly for advisors, Brijesh and Ashish, we have very good conversation. इन्होंने मुझे बोला यार the best thing for any investor is to do inaction, not do anything. But अगर हम 1 साल कुछ नहीं करें तो उनको लगता है एडवाइजर ही ढीला है, ये कुछ कर ही नहीं रहा. So it's a very tough situation for every party. So the best advice is not to do anything. But अगर वो नहीं करेगा तो आपको लगेगा यार ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो कुछ करता ही नहीं है. दूसरा एडवाइजर तो कहता है इधर चलो, उधर चलो, डेट से निकलो, उधर चलो. So inaction is much better in investing, though it is not intuitive. Intuition wise तो action ही चाहिए, लेकिन investing में ऐसा है. So society prefers rash action to a sensible wait and watch strategy. So that's how we are built. So there was a research done by Fidelity. तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी class of investors ने बनाया. Any idea who made maximum money in investing? People who went up and the inheritors didn't know पैसा लगाया हुआ है. 30 साल बाद discover हुआ inaction था. बिकॉज कोई एक्शन ही नहीं हुआ उस पर एंड इट कंपाउंडिंग इफेक्ट आ गया उसके अंदर. सेकंड बेस्ट कौन था? एक तो जो वेंट अप मेड मैक्सिमम वेल्थ. सेकंड बेस्ट किसने बनाया? जो लगा के भूल गया, 20 साल बाद याद आया. जो स्टेटमेंट अपनी हर मंथली देख रहा है, हर 6 मंथली देख रहा है, उसका पैसा नहीं बनने वाला है. बिकॉज या तो वो खुद एक्शन ले लेगा या अपने एडवाइजर को प्रॉम्प्ट करेगा एक्शन लो. कुछ नहीं हुआ इसमें. सो दोनों तरफ. So it's a pull and push. If you don't take action, you will prompt your advisor कि यार 6 महीने में कुछ पैसा नहीं बना. So that's where you are stuck in this. So one of the famous mathematician Blaise Pascal said, all of humanity problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone. So बैठ ही नहीं सकता, इसलिए वो problem create करेगा कोई. So Brijesh and Ashish have been popularizing liquid funds, and you know we have very good conversations कि क्या challenge आ रहा है. तो बोलते हैं इन्वेस्टर को लिक्विड फंड में बिठाना ही मुश्किल हो रहा है. एंड आई विल टेल यू माय ओन एग्जांपल. माय पोर्टफोलियो इज कमिंग अप. मैंने जो मिस्टेक्स करी हैं मैंने एक्सेल शीट में डाल दिया आपके लिए आफ्टर आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. एंड आई फील कि मैंने क्या किया ये 12-13 साल बीइंग इन द इंडस्ट्री. तो बोलते हैं कि लिक्विड फंड में बिठाना बहुत टफ है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव सैट ऑन अ लिक्विड फंड फॉर 1.5 years. आई वॉन्टेड टू लर्न बिकॉज आई एम एक्शन ओरिएंटेड, बिकॉज एक्शन वॉज हेल्पफुल इन माई करियर. सो आई थॉट एक्शन हर जगह करना चाहिए, लेकिन मेरे को अभी समझ आया कि इन एक्शन करना पड़ेगा. सो आई एम लर्निंग टू सिट ऑन लिक्विड फंड. सो आई हैव सेट फॉर 1.5 years विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय demonetization and Brexit, and I'm just sitting quietly because I've learned that is important. This is my journey, my personal journey. At the age of 30, I joined ICICI Bank, had an education loan of 4 lakhs. It's a typical journey of an MBA who studied on education loan. 2004 car loan, boss said गाड़ी होगा तो सेल्समैन मरेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. 2005 personal loan, marriage 3 lakhs. 2005 and 2 years later bought ULIPs. बैंक में काम करता था, खुद ही ULIP ले लिया टारगेट पूरा करने के लिए. 2005 to 8 रीपेड लोन्स. बीवी ने थोड़ा गुस्सा किया कि ये क्या हो रहा है, लोन बढ़ता जा रहा है. सो रीपेड लोन्स. 2007 में आईसीआईसीआई बैंक में था तो एक स्कीम आया प्राइवेट इक्विटी. तो उन्होंने बोला ये जनता के लिए 1 करोड़ मिनिमम टिकट है, इंप्लॉयज के लिए 10 लाख है. मेरे पास कोई पैसा नहीं था. मैंने एक और लोन दबाया और 10 लाख उसमें इन्वेस्ट किया कि ये तो लाइफ बन जाएगा. 1 करोड़ वाली स्कीम 10 लाख में मिल रही है. फिर मैंने आई स्टार्टेड SIP 2010 में. वी वर इन द बुल रन इन द रियल एस्टेट. तो SIP कैंसिल किया, यूनिटेक के ऑफिस में गया, एक अपार्टमेंट बुक किया गुड़गांव में. फिर उसके बाद वाइफ ने बोला वो एनुअल गोल्ड नहीं खरीदा हमने कभी, तो 200 ग्राम गोल्ड लिया. फिर उसके बाद वो जो DDA का लॉटरी निकलता है ना, वो चंडीगढ़ में अप्लाई किया एक फ्लैट में, वो निकल आया. तो घर में बहुत झगड़ा हुआ. मैंने बोला ये तो लेना पड़ेगा, तो लॉटरी में निकला है. लॉटरी तो हमको पहली बार मिला है. तो एक और फ्लैट लिया एंड फिर स्टार्टेड रीपेइंग EMIs. फिर SIP स्टार्ट किया अभी लास्ट 1.5 years. एंड with all this, you know, I still have good money. So after all, I was lucky that so many mistakes. Simple था काम बहुत, सिर्फ SIP करना था, लोन प्रीपे करना था, SIP बढ़ाना था हर साल. अगर ब्रिजेश या आशीष मिल जाते और इनकी मान लेता 12 years back, I would have
probably 4 or 5x of, अगर ये इसमें नहीं जाता, इधर जाओ उधर जाओ, you know. So now I'm still happy I still, you know, learned that hard way. Okay, Warren Buffett also talks about a punch card approach. बोलता है आप बस के कंडक्टर की तरह हो, आपकी जो टिकट की बंडल है उसमें 8 ही टिकट है, आपको 8 ही बार इन्वेस्ट करना है 70 ईयर्स में. सो इन 70 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग ही हैज मेड ओनली 8 to 10 टाइम्स इन्वेस्टिंग. उसने डाला ही नहीं है, वो बैठा है. एवरेज होल्डिंग इज 33 ईयर्स. आई शोड इट लास्ट ईयर, पीपल हु प्रेजेंट लास्ट ईयर, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर. एवरेज होल्डिंग ऑफ वॉरेन बुफेट 30 ईयर्स प्लस. वो एक ही बार लेता है जब मार्केट गिरता है और 30 ईयर्स तक बैठता है. So I'll revise because it's psychology, boring history. So we've done history of human brain, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं. We've listened to Rolf Dobelli. Then we've done the action bias. We'll move to next bias. 30 minutes is up, but do you want more? Yeah. Okay. So next is the framing and the anchor bias. Okay, this is also very interesting. Let me show you a video of a anchor bias. Thank you. Thanks for coming today. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning, and thank you all for coming today. We want to kick off 2010 by introducing a truly magical and revolutionary product today. Tremendous breadth. What should we price it at? Well, if you listen to the pundits, we're going to price it at under $1,000, which is code for $9.99. When we set out to develop the iPad, we not only had very ambitious technical goals and user interface goals, but we had a very aggressive price goal, because we want to put this in the hands of lots of people. And just like we were able to meet or exceed our technical goals, we have met our cost goals. And I am thrilled to announce to you that the iPad pricing starts not at $9.99, but at just $499. $499. Yeah, yes. So this is what anchoring bias is. The pundits are saying 999, but it's at 400. So everyone buys it. So you anchor it here, and then that's how we sell it to you. You invest. I know that your capacity to invest is 20 lakhs. I'll say 2 crore लगाना है सर इसमें. You'll say यार मेरे पास तो 20 लाख ही है. So that's how the anchor bias is. Okay, I'll give you a basic example of anchor bias. तो लाजपत नगर में पंजाबी स्टोर में कपड़ा खरीदने का एक द लेडी वॉक्स इनटू अ स्टोर, और कॉटन का वाइट कपड़ा. तो वो दो सेल्समैन है उसमें. एक काउंटर पे बैठा है मालिक और एक उसका भाई जो दिखा रहा है आपको कपड़ा. तो द लेडी सेज कितने रुपए मीटर है. तो उधर से आवाज आती है 62 रुपए मीटर. पंजाबी में 62 मतलब 62. 62 रुपए मीटर. तो दिस मैन हु इज सेलिंग ही सेज 8 रुपए मीटर. तो द लेडी अंडरस्टैंड्स दैट उसने 62 बोला है और शायद इसने 8 सुना है. सो उसको 50 मीटर लेना तो 100 मीटर दे दे. एंड दैट वाज द सेल स्ट्रेटेजी. दे डू इट विद एवरीवन. एंकर 62 पे हुआ और सेल 8 पे हो गया. 8 ही था वो रेट. Another example which I saw in Bombay train, 2 संतरा बेचने वाले थे.
दोनों के सर पे टोकरा था और 2 कंपार्टमेंट में जाते थे। पर्सन 1 इन 1 कंपार्टमेंट, उसने बोला 15 रुपए का एक, बहुत बड़ा वाला है, और पर्सन बी दूसरे कंपार्टमेंट में कि 15 रुपए का एक। अगले स्टेशन पे एक्सचेंज, पहला वाला दूसरे कोच में, दूसरा वाला पहले कोच में, 10 रुपए का है। तो यू से यार जो पहले आया था पिछले स्टेशन में तो 15 बोल रहा था, ये 10 बोल रहा है, ले आओ। तो इट्स अ स्ट्रैटेजी एंड आई बाय माय ओन वेजिटेबल्स, आई सी दिस स्ट्रैटेजी बाय वेजिटेबल वेंडर्स इन द मार्केट। दे हैव एग्रीड फॉर इट कि पहला आदमी इतने बोले, देयर अ कॉमन पूल, दे हैव कॉमन इन्वेंट्री। सो पहला आदमी बोलेगा 20 रुपए किलो, दूसरा बोलेगा 12 रुपए किलो, सो यू से हाँ ये ठीक है। सो दैट्स एंकर बायस। ऑल्सो टेल यू लिटिल बिट अबाउट फ्रेमिंग बायस, कि जैसे हम फ्रेम करते हैं उससे कितना फर्क पड़ जाता है। लेट्स सी अ वीडियो ऑफ अ फ्रेमिंग बायस। Coming close. Closer. Because the more you think you see, the easier it'll be to fool you. Because what is seeing? You're looking, but what you're really doing is filtering, interpreting, searching for meaning. So he's going to show you a pack of cards. So I request you to be glued to the screen and you can play this game with him. So he'll do the cards like this. Just select the card of your choice, जो आपको मन करता है, ठीक है? You could have different cards, all of you. My job? To take that most precious of gifts you give me, your attention, and use it against you. I'm going to flip through this deck, and I want you to see one card, and not this one. That's too obvious. Pay close attention. That was too fast. I'll do it again. Are you ready? Mm-hmm. Okay. Did you see one? You've seen your card? Don't say it. You've seen your card? Do you have one in mind? Yes. And do you see your card here? No. That's because you're looking too closely. And what have I been telling you all night? The closer you look, the less you see. So was that your card? Framing? No, it was everyone card. So I'm not going to tell you the trick, but it was framed. So I know how you think. So I knew you will select Satyit. Okay. Sorry, no. I can replay. There was only one Satyit. But I know your brain, how you think. So I'm a salesman, right? Okay, so framing. Framing is how you put it so that you know how the decision will be taken by the others. So same data of economy, GDP, looked by Raghuram Rajan will make you bearish. Same data spoken and looked by Mr. Arun Jaitley will make you bullish. So I have seen a lot of fund manager presentations. If the fund manager presentation starts with we are in the middle of mother of all bull runs, आफ्टर दैट उसके बाद वो जो मर्जी बोलता रहे कि कुछ नहीं होने वाला है, अर्निंग्स में स्ट्रेस है, ये आपको वही याद रहेगा, फ्रेम हो गया, वो एंकर हो गया आप लोग. एंड इफ अ फंड मैनेजर स्टार्ट्स विद अर्निंग्स में प्रेशर है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद वो जितना मर्जी बोल दे कि डिमोनेटाइजेशन अच्छा है, मोदी जी अच्छा करेंगे, यू विल से कि ये फंड मैनेजर बेरिश है. दैट्स द डिसीजन, दैट्स हाउ वी गेट कैरिड अवे. So industry is also gone to understand that, and we make more bullish statements than realistic statements in front of you because we know how you think. So be conscious of that. So same quarterly results, IT company, let's take an example of IT company. One IT company, एक एनालिस्ट है, वो सेम रिजल्ट को कैसे बोलेगा स्टॉक ऊपर चला जाएगा 5%, और सेम रिजल्ट को कैसे बोलेगा स्टॉक अगले दिन 5% चला जाएगा. लेट मी टेल यू हाउ. पहले आदमी ने बोला आईटी कंपनी के, इन द चैलेंजिंग एनवायरमेंट वी स्टिल मैनेज टू गेट 13% अर्निंग ग्रोथ, स्टॉक वेंट अप. दूसरे ने बोला सेम रिजल्ट आया, वर्ल्ड इज फेसिंग ब्रेक्सिट, इंडिया इज गोइंग थ्रू डीमोनेटाइजेशन,
we also got impacted and got 13% growth. Stock price down. So this is how framing works. So a very interesting framing and anchoring example. A group of PhD students between the age of 28 to 35 were asked 2 questions. पहला क्वेश्चन था, प्लीज रेट योर लाइफ. लाइफ की रेटिंग दो आपको 10 में से, क्या कैसी चल रही है आपकी लाइफ. तो सबने रेट किया कि हमारी लाइफ 8 to 10 चल रही है. 8, सो पीपल जनरली सेड 8, 9, 10 बिकॉज पीएचडी खत्म होने वाला है, इतना मेहनत किया है, लास्ट स्टेज पे है. तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा, प्लीज रेट योर रोमांटिक लाइफ. तो सबने रेटिंग लिख दिया कि 3 to 5 बिकॉज टाइम ही नहीं मिला, और ये तो सैड पार्ट है लाइफ का, अभी तो पढ़ाई वाला फेज है, तो 3 to 5. सो देन विद अनदर ग्रुप ऑफ पीपल दे चेंज द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस. तो पहला पूछा वो, प्लीज रेट योर रोमांटिक लाइफ. तो लोगों ने लिखा 3 to 5. फिर उन्होंने पूछा प्लीज रेट योर लाइफ. तो उन्होंने बोला अगर रोमांटिक लाइफ ही नहीं है इस एज में तो बाकी जिंदगी का क्या फायदा. तो उसकी भी रेटिंग 3 to 5 हो गई. सेम क्वेश्चन, ऑर्डर डिफरेंट, different thinking, different analysis, different analogy. Yeah, which one? Ha. So last small video of 1 minute on framing and anchoring. सीधा भाई को याद करो, पैसा चाहिए हो, कुछ भी चाहिए, छोटो चिंता मत करना. एक कप चाय ला. छुट्टा नहीं है. अरे ये तेरी टेप पे, टेप ले. 1000 रुपया? टेप पे चल. 1000 रुपया टिप? चाय के पैसे बाद में दूंगा, चल. थैंक यू साहब. अरे यार कितनी गंदगी है इस देश में. ए छोटू. जी साहब. अरे यार किसी को मेरे बंगले बेच के 3-4 एसी क्यों नहीं मंगा लेता, कितनी गर्मी है यार. इतनी चर्बी है तो 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? बेटे आदत हो गई है. एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे. रातों रात करोड़पति हो गए हम. रातों रात करोड़पति? हाँ. कैसे? 25 दिन में करोड़पति. करोड़पति 25 दिन में? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? धंधा नहीं है ये. ओह सरक उधर. एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है. 25 दिन में पैसा डबल. 25 दिन में पैसा डबल? तो मुझे भी डबल कराना है पैसा. ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है. इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए. ए चाय लाना मेरे भाई. ए भाई अभी अपनी पहचान हो गई ना. साहब के लिए मेरी वाली स्पेशल चाय बनाई दे. ए भाई. अरे तुझे जाना हुआ कितना टाइम हुआ है? अभी 7 मिनट तो हो गए ना भाई. भाई प्लीज. अच्छा ठीक है. इसके लिए कम से कम 70 चाय. शक्कर डालिए. जी. जा साहब के लिए मेरी वाली 10-12 चम्मच शक्कर ला. जा ना भाई. इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए. 70 लाख? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. 70 लाख तो नहीं है मेरे पास. 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती. 50 लाख तो फिर अपना काम खल्लास. ए सुन बैठ. इतना उदास मत हो. मेरे दिमाग में एक और स्कीम है जो कि 30 लाख रुपए की है. 30 लाख? हाँ भाई मेरे पास तो 20 लाख है. शिट. करो कुछ करो भाई. चल ठीक है. एक काम कर. कहाँ है पैसे? बाजू में भाई. नकद कैश अभी ला सकता है? हाँ अभी ला सकता हूँ मैं. एक काम कर, 22 नंबर बंगले पे ले आ. जी भाई मैं पैसे. आप बंगले पहुँचो, मैं अभी पैसे लेकर जाओ. बाकी के 50 लाख कहाँ से लाऊं? भाई इसकी गारंटी क्या है? कौन सी गारंटी? हाँ सिक्योरिटी तो चाहिए ना भाई. तू जा. मैं भाई तू वापस जा. नहीं भाई नहीं, ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं. तू जा. अरे बाबा तू जा. अच्छा भाई तू जा. दिमाग खराब मत कर. माफ कर दो. आप मेरे गॉडफादर हो भाई. ये किसी पर अरे मैं पैसे लेके जा अपने बच्चों को मिठाई खिला. जा तू. तेरे लिए 10 रुपए की स्कीम अच्छी है. तू जा. मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाई. मैं आपके लिए लाता हूँ ना भाई. ठीक है. मैं अभी बंगले पर पहुँचता हूँ. ओके. आएगा ना? आऊंगा ना भाई. पक्का आएगा ना? अरे 100% आऊंगा भाई. Okay, the sale is done. Rajesh, 5 minutes more to conclude. Okay, thank you.
Okay, so we have much more, but probably we'll run you to 2-3 concepts. Yeah, if you can show the anchor again. Anchoring bias back. Yeah. So this is, don't need to look at the screen, but employer का anchor क्या होता है? All of you have led teams, all of you have been successful. Employer क्या चाहता है कि employee ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, कम से कम बोनस दें, कम से कम राइज दें, ज़्यादा चिक चिक ना करे, no stupidity, high output. This is the employer anchor. Employee का anchor क्या होता है? कम से कम काम करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, and the overlap. Met him HR in VideoCon. So the overlap is what is normally coexistence. That's how people are anchored. Next. Biases, or we'll go to learnings. Okay, we'll go to few learnings. I'm skipping more biases because I think you got an idea of what I was saying. Yeah. Okay. So this is a problem of averages which you go through. So equity में कितना रिटर्न आएगा? Any idea? अगले 5 साल. We discussed that over last 2-3 years. 15%. So you know how your mind is calculating right now, because I told you I can read minds. You are calculating कि 100 रुपए लगाएंगे, अगले साल 115 हो जाएगा, फिर 131 हो जाएगा. But last 35 years में 15% के आसपास रिटर्न सिर्फ 2 या 3 साल आया. बाकी साल कैसे आता है इक्विटी का रिटर्न? +40, -20, +13, -7. So you're not wired for that. When you put money and you see -40, you said ये क्या हुआ? ये तो 15 आना था. So average 15 है. Average is very dangerous concept. तो there's a bus, उसमें 50 लोग हैं जिनकी एवरेज वेल्थ $54,000 है अमेरिका में. अगर उसमें बिल गेट्स आ जाए तो क्या होगा? एवरेज वेल्थ. यू हैव टू वॉच फॉर दैट इनसाइड. स्क्यू तो नहीं है. अगर एवरेज वेट ऑफ 50 पीपल इन अ बस इज 60 kgs और उसमें 250 किलो का आदमी आ जाए, इट स्विंग द एवरेज. सो एक आदमी ने रिवर क्रॉस करना था, उसने पूछा किसी से एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर कितना है, तो बताने वाले ने बोला 4 फीट. तो आदमी ने, मैं तो 6 फीट हूं. वो डूब गया. तो जो डूबा वो इन्वेस्टर था और जो बताने वाला वो एडवाइजर था. कौन गलत है? कौन गलत है? So watch out for averages. Lot of problem with that. Don't, whenever you see average ये है, be cautious कि अंदर क्या है उसके. Exponential growth. We don't think of, we are not wired to think exponentially. अगर आज एक सर्जरी स्टेंट डलवाने की 5 लाख रुपए की है, तो 25 इयर्स के बाद अगर मुझको भगवान ना करे कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो तो कितने की होगी? 1.64 करोड़. तो सुनने में लगता है कैसे हो सकता है? 5 लाख 1.64 करोड़ नहीं हो सकता. सो दिस इज पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज ऑल्सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग. कंपाउंडेड एट व्हाट कॉस्ट? सो दिस इज वेयर द हेल्थ केयर इन्फ्लेशन इज हैपनिंग. इन मैटर्निटीज 45%, एंजियोग्राफी 57% चेंज, एंजियोप्लास्टी 58% चेंज. That's how the numbers are ticking in healthcare inflation. Next. Okay, a lot of people don't understand this. I don't know why. 15% of your portfolio becoming 2 times is better than 2% of your portfolio becoming 5 times. Let me make it simple. It's complicated. 100 रुपए हैं, 15 रुपए लगाओगे और 2 गुना हुआ तो कितने हो जाएंगे टोटल? 115. 115 वापस आएंगे 1 साल बाद. बट अगर 2% ही लगाया एक म्यूचुअल फंड स्कीम में और वो 5 गुना हो गया, सब कुछ हो गया, फंड मैनेजर ने भी कर दिया, लक भी हो गया, मार्केट भी चढ़ गया, तो 110 होंगे. सो इफ यू हैव अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू गिव अ प्रॉपर वेट टू इट. एंड मोस्टली पीपल, आई सी पोर्टफोलियोज, किसी के पास 40 स्कीम है, किसी के पास 30 स्कीम है, किसी में 1% वेट है, किसी में 2% वेट है. इट विल नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, बिकॉज वो अच्छा कर भी गया अगर, तो पोर्टफोलियो वेट इफेक्ट नहीं आया. सो बी वॉचफुल फॉर दैट. दिस मिस्टेक विच आई सी. क्लोजिंग टिप. आई नो पीपल आस्क मी को टिप दे दो, तो दिस इज अ क्लोजिंग टिप. Intelligence versus decision making. The more intelligent we are, the better stories we frame around it. The more creative we are, the better we justify with a more creative answer. अच्छा ये इसलिए हुआ क्योंकि ये demonetization हुआ, इसलिए मेरे पास कैश था तो मैं फंस गया. So you know, this is how it is. More intelligent people take even worse decisions is one point of view. Right? Thank you very much. I think I extended by 10 minutes. Yeah. Thank you very much. Open for questions. Yes, sir. Point of averages. I guess one point of average is
That's the right way. And also in the average, inside the average, look for what is the deviation. अगर average 10 आ रहा है और deviation 20 भी जा रहा है, तो be aware of that. Average 15% is true, but average मिलता नहीं है because मिलता कुछ और है statement में. Can you show the first slide? क्यों नहीं मिलता है? So I'll tell you the answer is here. Why you don't get what is on the Excel sheet? Excel sheet में दिखता है यार 20% दिया इस फंड ने, मेरे को तो नहीं मिला. So this is the advisor. This is a person called Carl Richards in US, who's figured out why investors don't see that in their statement and only in the Excel sheet. Because जब आप आते हो और जब आप जाते हो, you are actually doing reverse because of poor decision making. When markets fall, you should be hungry. You should be calling Brijesh, but it's their job. आशीष ही आपको फोन करता है जब मार्केट गिरता है, सर डाल लो पैसा. बट योर इमोशनल डिस्कम्फर्ट इतना हो जाता है जब मार्केट गिरती है, इतना नेगेटिव न्यूज होता है अराउंड दैट यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड टू डू अ चेक फॉर इन्वेस्टिंग. सो इट नीड्स कन्विंसिंग फ्रॉम द एडवाइस. दैट्स व्हाई यू नीड एन एडवाइजर. कार्ल रिचर्ड वाज राइट. Yeah, so averages are fine, but if you understand what's inside the average will help you a bit. Any other question on behavioral decision making, errors of thinking, errors of judgment? Thanks a lot. Thank you very much. Thank you.